As the session proceed, I'm sure that everyone will be having their doubts. So please feel free to write your doubts in the chat box. We will be answering them as one by one. So please feel free to ask your queries in the chat box. I request everyone to please be patient for 2-3 minutes. We are waiting for our faculty advisor, that is Ravi Hirudkar sir. Once he comes, we will start the session. Good evening, everyone. I'm Chandran Agriwar, student of EXTC Department, Professor Ramagi Institute of Technology and Research. Welcome you all to the webinar on Introduction to Competitive Programming. Guys, as I'm sure everybody here would be aware of the importance of programming in today's time. This skill holds very high demand and is also a gateway to many opportunities for an individual. Competitive programming is the key for anyone into IT sector. Taking this into consideration, we, the students of this institution, under the guidance of Professor Ravi Hidulkar, have organized this webinar to give students a peek into the competitive programming world. I assure everyone that you would be interacting with some of the smartest minds of this institution.
as authentication is followed, I, as a fellow colleague, would like to proudly inform that three of the students from our committee have cleared the code beta with the following ranks: Bindu Taborkar, AIR 2382230, Shubham Bania, AIR 9781, Suchit Malik, AIR 9913. I would also like to take this opportunity to congratulate Anirudh and Surjit for getting placed in TCS through CodeVita. I welcome Professor Ravi Hirudkar, our faculty advisor, in today's session. Welcome, sir. Now, I would like to request Shubham Bania to proceed with today's session. Okay. So thank you, Chaitanya, for such a great introduction. Okay. So hello, everyone. Am I audible to everyone? Yeah. Okay. So hello, everyone. I hope you all are doing great and have kept your learning continue in this pandemic scene. So let me first introduce myself. My name is Shubham Bania. I am a final year student at PRMITR, majoring in computer science and engineering. So I've been practicing competitive programming from last 2 years. तो मैं जब सेकेंड सेमेस्टर में था एट दैट टाइम आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ आवर कॉलेज इवेंट्स दैट इज कोडिंग डिकोडिंग और तब मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एंड आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली आई वाज एबल टू क्लियर द फर्स्ट राउंड ओनली बट मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट तभी से बहुत पसंद आने लगा था एंड दैट्स द रीजन आई हैव कीप प्रैक्टिसिंग ऑन वेरियस वेबसाइट्स टू इम्प्रूव माई सेल्फ. So yeah, that's all about me. And now, without wasting any time, let's begin our webinar with a beautiful quote from Steve Jobs, which says, "Everybody in this country should learn to program a computer because it teaches you how to think." Okay. So अब स्टीव जॉब्स ने ये तो बोल दिया कि सबको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बट प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या? तो ऑलमोस्ट सभी को तो पता होगा प्रोग्रामिंग क्या होती है, बट कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये भी आया होगा दैट प्रोग्रामिंग मीन्स सी, C++, Java, Python, Ruby, or PHP, right? But no, these are only the programming languages. So, what is programming? Okay, so let's see the definition. So, the process of expressing the solution to a problem in a language that represents instructions for a computer. Okay, तो अब आप कंप्यूटर को सिर्फ ऐसे तो बोलोगे कि नहीं कि 5 और 2 ले और इनका सम बता दे. So you have to give proper instructions to the computer so that the computer can follow it and give you expected output. Okay, so इस process को हम बोलते हैं programming. And the instructions which are given to the computer, those languages are called programming languages. Okay, ठीक है. अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रोग्रामिंग क्या है, बट अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? ओके, so let's see that. So computer programming is a mind sport usually held over the internet or local network involving participants trying to program according to provided specifications. ठीक है, तो ये एक्चुअली हम कह सकते हैं एक प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट है which can be conducted online or offline and you have to solve as many problems as you can in the specified time period. Okay, तो मैं तो एक्चुअली यही मानता हूँ कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट लर्निंग वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इन अ वेरी फन वे. ओके, सो इफ आई टेल यू माय एक्सपीरियंस देन मुझे कभी समझ नहीं आता था जब प्रोफेसर्स पढ़ाते थे ये सब्जेक्ट. सो दे मोस्टली फोकस ऑन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बट एक्चुअली कोई एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, दैट यू विल गेट टू नो जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो. ओके, नाउ सो व्हाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? क्यों करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? अब इससे कुछ ना कुछ फायदे तो होनी चाहिए. अब हम एक बडिंग इंजीनियर्स है तो हम बिना फायदे के तो कुछ काम करेंगे नहीं, राइट? सो क्यों करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? सो द सबसे पहला फैक्टर है इट पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स. सो मतलब देखो, यू आर वर्किंग इन पब्लिक, तुम बहुत सारे वेबसाइट्स पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे
कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो यू आर एक्चुअली वर्किंग पब्लिकली, तुम्हारा एक नाम बन रहा है, ठीक है। सो लाइक डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स के थ्रू नाम बनाते हैं, तुम अपने वेबसाइट्स पर पार्टिसिपेट करके अपना नाम बना रहे हो, सो दोनों अपनी जगह सही है, ठीक है। So some programmers have skills like algorithm skills, and some programmers have development skills. So you are expressing yourself publicly through problem solving. तुम्हारी actually problem solving skills काफी सही है. You actually know very much algorithms and you know how to solve hard problems, complicated problems. ये बहुत सही factor है तुम्हारे पास. Okay. Now the next point is prepare you well for technical interviews by giving the ability to solve algorithmic problems within a time limit and not to be stressed. Okay. So ये तो सबसे important advantage है competitive rank का. तो कैसे? So देखो कई लोग अब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो टेक्निकल इंटरव्यूज में 70 to 80% सेम चीजें हो रही है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है, आपको एक प्रोग्रामिंग पजल दी जाती है और आपको उसे सॉल्व करना होता है विद इन अ टाइम लिमिट, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। फर्क बस इतना होता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपसे कोई पूछ नहीं रहा होता है कि आपने सॉल्यूशन कैसे लाया, दे जस्ट एक्सपेक्ट कि आपने सब टेस्ट केसेस क्लियर कर ली है, सो योर आंसर इज करेक्ट। और वन मोर पॉइंट दैट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से हार्डर प्रॉब्लम्स कभी भी टेक्निकल इंटरव्यूज में नहीं आते हैं, ओके। वहाँ इजी इसीलिए होते हैं बिकॉज द इंटरव्यूअर कैन एक्चुअली सी योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि आपको वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है सॉल्यूशन कैसे आया। तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में इतना सारा कोड लिख लेते हो कि आपको लगता है कि प्रोग्राम ही तो लिखना है, वो तो कितना सारा लिखा है, एक बार बस सॉल्यूशन सोच लिया तो कोड तो फटाफट लिख लेंगे, ओके। Alright. So the next point is it makes you a desirable candidate for major companies. Alright. So there's a world contest called ACM ICPC, which is considered as the Olympics for competitive programming. Okay. So जितनी भी टेक जाइंट कंपनीज है लाइक एप्पल, फेसबुक, Amazon, Google, all these companies they actually hire through such contests, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस कैंडिडेट ने इतनी सारी टीम से कॉम्पीट करके अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है, तो इसमें कुछ बात तो होगी, ओके। एंड नॉट जस्ट दीज कंपनीज बट ऑल्सो कंपनीज लाइक TCS एंड इन्फोसिस, ये कंपनीज खुद की प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट कंडक्ट करती है, लाइक कोडविटा फॉर TCS एंड हैक विद इन्फाई विद फॉर इन्फोसिस। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। So if I give you a hope for starting competitive programming, then the competition which is CodeVita, if you solve just one problem, then you can get an opportunity to uh, go for direct interview in TCS. Okay. Okay. So the next point is it makes you more faster and focused. तो आई थिंक फास्टर तो क्लियर ही है कि अब प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट हो रही है, 2 घंटे की है या 3 घंटे की हो रहा है, एंड आप उसमें 5-6 प्रॉब्लम्स कर रहे हो, सो यू आर एक्चुअली कोडिंग फास्टर, ठीक है। तो फास्ट तो तुम हो ही जाओगे, हर चीज में हो जाओगे, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट आफ्टर सम टाइम यू आर बिकमिंग फास्टर इन रियल लाइफ एज वेल। तुम्हें हर चीज में आदत पड़ जाएगी कि यार इसे जल्दी जल्दी खत्म करो, एंड विद द सेम थिंग यू आर बिकमिंग मोर फोकस्ड एज वेल, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट टीचेस यू हाउ टू वर्क इन टीम्स, ओके। तो हाँ, तो ये कैसे, तो जैसे बहुत सारी कॉन्टेस्ट्स है जिसमें आपको सिंगली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बट देयर आर ऑल्सो मेनी प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट जहाँ आपको इन अ टीम पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि आप अपने टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये सॉल्यूशन जल्दी सोचता है, ये कोडिंग में फास्ट है, तो आप कोई टास्क को अच्छे से डिवाइड कर सकते हो विद इन योर टीम मेंबर्स, एंड दैट विल मेक यू अ गुड लीडर ऑल्सो, ओके। द लास्ट पॉइंट इज इट्स फन, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी फन टू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कई लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसीलिए अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं करते हैं, और फिर आगे जब प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते हैं तो वो डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। तो एक प्रॉपर स्टार्ट जरूरी है, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अ नेक्स्ट टॉपिक
which is how to start. Okay. Yeah. So the first step here is learn a programming language. ओके okay. तो आप कोई भी लैंग्वेज पहले तो सिलेक्ट करो कि आप किस में कंफर्टेबल हो. ओके okay. ठीक है, आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करो और उसे अच्छे से पढ़ो कि उसमें क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन से फंक्शंस उसमें अवेलेबल है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. ओके. सो द नेक्स्ट स्टेप इज चूज अ प्लेटफॉर्म. ओके. सो अब आपने लैंग्वेज तो पढ़ ली, तो अब प्रैक्टिस कहाँ करें. ओके. तो ऐसी कई वेबसाइट्स है, लाइक कोडशेफ है, हैकर रैंक है, कोड फोर्सेस है, स्पॉज है. आप यहाँ जाके अपनी जो स्किल्स है उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस मालूम पड़ने वाले, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको बहुत सारे वेरिएशंस मालूम पड़ेंगे. ओके. या. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ओके, तो ये भी काफ़ी यूज होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में. लाइक अब कई बार क्या होता है कि आपको कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम ही इम्प्लीमेंट करने को बोलते हैं, बट इट इज़ गिवन इन अ स्टोरी फॉर्मेट. वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि ये एल्गोरिदम है या ये डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना है. दे गिव यू द क्वेश्चन इन अ स्टोरी फॉर्मेट. ओके. सो इफ यू नो दैट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, you can implement it quickly. Okay, so you have to get your hands dirty in the data structures and algorithms. Okay. So the next step is practice. So ये तो काफ़ी ज़रूरी है. If you want to be good at computer programming, तो practice तो आपको करनी पड़ेगी. Okay. And yeah, the next step is compete in contests. So after you have participated well, and now if you think if you have practiced well, and now if you think you are comfortable with the environment, then you can go to participate in contests which are held by various websites. एंड अगर कॉन्टेस्ट में आपसे एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, देन डोंट फील डिमोटिवेटेड. इट हैपन्स विथ एवरीवन. नहीं समझ में आता है कई बार कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट डोंट लूज होप देयर. कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशन सबमिटेड बाय अदर पार्टिसिपेंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट इज हैव फन. ओके. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ एज अ गेम आप उसको कंसिडर करो, एंड देन यू कैन एक्चुअली एंजॉय इट वेरी वेल. ओके. Now the next question is which programming language to select. Okay. So ये क्वेश्चन का आंसर तो एक्चुअली मुझे भी जानना होता था when I have started computer programming. तो देखो, the best programming language for computer programming is the programming language that you know the best. इससे अच्छी और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आपके लिए. ओके. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. यू शुड कीप लर्निंग अदर लैंग्वेजेस एज वेल, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए आप एक ही लैंग्वेज से स्टार्ट करो, and then later you can have a substitute programming language. Okay. So if you have just started computer programming, it is generally recommended that you should go for C++. Okay. क्योंकि एक मिड लेवल लैंग्वेज है, तो आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज जल्दी से स्विच कर पाते हो अगर आप C++ अच्छे से सीख लेते हो. ओके. C++ is the most commonly used language for competitive programming. ये जनरली काफ़ी प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं कोड लिखने के लिए, बट ऐसा नहीं है, कई प्रोग्रामर्स है जो आज भी सी का ही यूज़ करते हैं. ओके. सो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आप लैंग्वेज की, आपको ये यूज़ करना है. ओके. एंड इट्स एग्जीक्यूशन टाइम इज फास्ट एंड प्रोवाइड यू द सपोर्ट ऑफ STL. ओके. तो ये पाइथन और जावा से जल्दी कंपाइल होता है. ओके. और इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड लाइब्रेरी है जो कि है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जहाँ आपको ऑलरेडी कई सारे फंक्शंस पहले से इम्प्लीमेंट आपको मिलेंगे. वहाँ पे आपको अलग से उसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है. ओके. ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनी अदर लैंग्वेज देन गो फॉर दैट एंड स्टिक टू वन लैंग्वेज एंड इम्प्रूव योर स्किल्स इन दैट लैंग्वेज. ऐसा नहीं कि अगर आप अभी एक लैंग्वेज से कर रहे हो कंप्यूटरिंग और कुछ देर कुछ अगले समय में आप कुछ अलग प्रोग्राम से, आप अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कोड लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है.
Okay, now where to learn. So अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से सीखे. So there are many well-known websites like Geeks for Geeks, Tutorials Point, W3 Schools, or you can go for HackerRank also, where they have separate sections to practice a programming language. Okay, so let's move further. Okay, so now where to practice. Okay, so ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीख ली बट अब प्रैक्टिस कहाँ से करें. So there are many websites to practice like CodeChef, HackerRank, HackerEarth, CodeForces, and TopCoder. Okay, yeah. So you can start practicing from the CodeChef platform. Okay, because the website is quite friendly and it also replicates how actual coding contests look like. So what is CodeChef? So CodeChef CodeChef is a computer programming community of programmers from across the globe, and it hosts a programming contest at the start of every month and two smaller programming challenges at the middle and end of the month. So, तो इन द स्टार्ट ऑफ द ईच मंथ एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट तो होती ही है जो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन चलती है एंड आफ्टर दैट देयर आर आल्सो स्मॉल कॉन्टेस्ट जनरली ऑफ 2 to 3 hours. ओके, so let's move to the website and see how we can start practicing. Okay, so this is how the platform looks like. Now if you have already have your account you can simply log in with your credentials, and if not you can click on the new user. Okay, so after clicking new user you can fill this up your information about like username and name, email, password, your gender, your city, what are you, student, professional or other, and you have to select a programming language. And जरूरी नहीं है कि आपको इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोड लिखना है. इट्स जस्ट कि आप कौन सा प्रेफर करते हो. ठीक है, सो मेरा तो अकाउंट है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ. Yeah, so this is my profile. Let's go to the home page. Okay, so as you can see a contest is already going on. Okay, October long challenge. So now if you want to participate in contest you can go for the compete tab here, and it shows all the contests going on or the contests that are going to start in future. Okay, so now if you want to practice first, so simply go on practice and learn tab, and from here go to practice problems by difficulty level. Okay, so click on this. Yeah, so these are all the questions on which you can practice. Okay, so now if you have recently started computer programming or looking forward to start, you should always start from the easy problems to get well versed with the platform. Okay, so here the questions are given in completely random order of their difficulty. So to start from the easy problems, simply click on accuracy tab once, like here, click on it. Okay, and now the questions are will be given in the uh, decreasing order of the difficulty. Okay, so to get the easy one, again click on it. So yeah, now the problems are sorted in increasing order of difficulty. Okay, that means the first problem is the most easiest one. Okay,
So you can click on any of the problem and try to solve it. Like, if I give you an example, then like this is a problem called sum of digits. Okay, so let's first understand the structure of computer programming problem. Okay, so the first line here, this is the name of the problem. Okay, uh, तो अब इससे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रॉब्लम में करना क्या है, बट ऐसा हर बार नहीं होता है कि आपको जैसा प्रॉब्लम का नाम है नाम में दिया हो आपको करना भी वही है. इट कैन बी समथिंग डिफरेंट. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट that here, so the next part is problem statement. So this is where your actual problem starts. So you need to read it very carefully, क्योंकि आपको यहीं से पता चलने वाला है कि प्रॉब्लम आपसे करवाना क्या चाहता है या ये किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है. ओके, सो रीड इट अगेन एंड अगेन until you get question perfectly. Okay, so here we are given you are given an integer n. So we have to write a program to calculate the sum of all the digits of n. Okay, so we are being given a number and we have to tell the sum of all the digits in the number. Okay, now the next part is the input. Sorry, next part is this input. So here you will be given how the input to your program will be provided. Okay, so like here we are given the first line contains an integer t, which is the total number of test cases. Then follow t lines, each line contains an integer n. So here you will first get the number of test cases, which states that for how many inputs you have to give the output. Like you can see here the sample input. Here this is the sample input and output. Okay, so here we are getting first 3, which are the number of test cases, and then you are given a 3 numbers. This sorry, these 3 numbers for which you have to tell the output. Okay, then the next part is the output format, which tells in which format your program should give the output. Okay, so here for each test case we have to calculate the sum of digits of n and display it into a new line. Okay, so अब यहाँ तक ऑलमोस्ट सबको ही प्रॉब्लम समझ में आ जाते हैं और वो डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि ये जो आखिरी पार्ट है that is constraints, ये काफी important होता है. So the constraints tell you that in which range the variables can be, and depending upon that you have to take the data types of variables like int or int or long int, like that. Okay, so let me also show you something. Yeah, so I would suggest all of you to take a screenshot of this, as this can be very useful for you to solve various problems. So yeah, so keep in mind one thing, that a computer can perform 10 raised to 8 operations in 1 second. More specifically 4 into 10 raised to 8 operations. Okay, so depending upon that you have to think of the a solution. Like for example, if you are given a sorted array of size 10 raised to 9, okay, and you are given an element to find in this array, and let's consider that the element is at the last position. Okay, so now here if you apply a linear search algorithm, then it will take you 10 raised to 9 operation, क्योंकि आपको हर एक array element से compare करना पड़ेगा to get the desired element. तो अब कंप्यूटर तो 1 सेकंड में 10 raised to 80 ऑपरेशंस कर सकता है, तो यहाँ तो 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो नाउ यू हैव टू कम अप विद एन एफिशिएंट सॉल्यूशन. सो यहाँ बोला गया था कि एरे सॉर्टेड है, दैट मीन्स वी कैन अप्लाई अ बाइनरी सर्च हियर. Okay, which will give you the element much faster than the linear search. Okay, so you can refer this table to understand which algorithm to apply. Okay, so now let's try to solve a problem.
Okay. So here the time limit is given 1 second. Okay, it is generally 1 second, and sometimes it is 2 seconds also. Okay, and these are the languages which are supported in which you can program. So let's write the program. Okay, so this is the IDE you can use to write a program, and from here you can select in which programming language you are going to write program. Like we have many programming languages here. Okay, so I will choose a C++ for now. Okay, okay. So this is how the logic goes for this problem. Okay, here, and yes, this is also an, you should remember, which will be very useful for you to in the competitive programming. That is this library, bits slash std c++.h. Okay, so yeah, so first we are taking the input for the number of test cases in this test, and we are running a loop for that, and then we are taking a number in n. Okay, and then we are running another while loop up till when the n becomes 0, and in that we are applying our logic. Okay, and at the end we are simply displaying our output. Okay, so yeah, so from now here, that is the custom input, you can you can give your program your custom input so as to check whether your program is working fine or not. So let me give the input as a 1 and 1 2 3. Okay, that means my program is going to get one input, which here is 1 2 3, and it should display the corresponding output, which in this case will be 6. So let's run it. So yeah, it's giving the correct output, 3 plus 2 plus 1, that is 6. Okay, but it will be considered correct only when you submit the code. So let's submit this. Okay, so it's showing wrong answer. Okay, so let's first understand what are the types of errors that maybe might encounter. Okay, okay. So the first kind of outcome is a wrong answer, which we have just seen, and which means that the output is not correct. Okay, so ये जनरली आपको तभी आता है या तो आपने लॉजिक कुछ गलत लगाया है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको a माइनस बी करने को बोला है तो हो सकता है आपने b माइनस a कर दिया हो, एंड लाइक दैट. एंड ऑल्सो दिस माइट हैपन व्हेन यू हैव नॉट डिस्प्लेड द आउटपुट करेक्टली. ओके, लाइक हमें आदत होती है कि कॉलेज में हमें ऐसी आदत होती है कि हमें बोला जाता है कि अगर कोई इनपुट ले रहे हैं तो हम बोलते हैं कि एंटर अ नंबर हमें सी आउट करना चाहिए, एंड वाइल गिविंग द आउटपुट वी शुड शो दैट द सम इज लाइक समथिंग लाइक दैट, वी display it from our side. But in competitive programming you should not do that. Okay, just what is asked you have to display only that thing. Okay, so let's see the output format again. So here we are given to calculate the sum of digits of n and display it in a new line. Okay, so we have to display it in a new line. Correct. So हमने जो अभी यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम, जस्ट अ सेकेंड. या सो यहाँ जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये सिर्फ पूरा एक ही लाइन में हमें आउटपुट दे रहा है. जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ से सैम्पल इनपुट लेके दिखाऊं,
ठीक है, लेट्स रन इट। ओके, तो ये हमें सब पूरा आउटपुट एक ही लाइन में दे रहा है, बट हमें सब नेक्स्ट लाइन में चाहिए। सो हम सी आउट करते समय बस एक नेक्स्ट लाइन दे देंगे यहाँ पे। यहाँ आपको ये नहीं करना है कि द सम ऑफ डिजिट्स आर, ऐसा आपको कुछ भी नहीं मेंशन नहीं करना है, बस जितना आपको पूछा है आप सिर्फ उतना ही आउटपुट में बताइए। ठीक है, सो लेट्स नाउ सबमिट इट। Okay, so now it's showing that correct answer. That means your program is correct. Okay, so other than wrong answers, there can be some other errors as well, like the compilation error, which means that the program can be compiled due to syntax errors or compiler error, uh, which means that आपने कुछ ना कुछ सिंटैक्स में गलती की है, लाइक आपने सी आउट सी आउट के सामने इंसर्शन या ऐसा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिख दिया है ऐसा, या फिर और कुछ जो भी सिंटैक्स एरर है आप उस पर आपको ध्यान देना है, ये एरर तभी आता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द रन टाइम एरर, which means that the program terminates with non-zero exit code or throws an uncaught OS exception. So ये एरर भी कई बार आता है। ये इसीलिए आता है क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने कोई एरे डिफाइन किया है ऑफ साइज 5 and you are trying to access the sixth element. So at that time this type of error occurs. ये तभी आ सकता है अगर आप कोई नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं एंड लाइक दैट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टाइम लिमिट एक्सीडेड और TLE। सो ये तो हमने डिस्कस किया है इधर भी, दैट मीन्स दैट योर प्रोग्राम इज टेकिंग मोर टाइम देन specified and now you have to come up with some another approach to remove this error. Okay, now the next one is the memory limit exceeded. So जनरली ये एरर आता नहीं है, ये तभी आता है जब आप स्पेसिफाइड मेमोरी यूज कर जब स्पेसिफाइड मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी यूज करते हो, और जनरली उतना एरिया हमको लगता ही नहीं है, उससे कम ही हमारा काम हो जाता है। ओके, सो ये जनरली एरर ये आता नहीं है। ओके, सो अगर आपको इनमें से कोई भी एरर नहीं आता है देन यू विल गेट द आउटकम एज एक्सेप्टेड, दैट मीन्स योर प्रोग्राम इज करेक्ट। ओके, so yeah guys, that's it for this introduction to computer programming. Now if you have any doubts you can ask. एंड या ये भी क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा था कि आईडी कौन सी यूज करनी है प्रोग्रामिंग के लिए। मैं तो जनरली सबलाइम टेक्स्ट यूज करता हूँ, बट आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, लाइक कोड ब्लॉक्स, डेवलपर CPP, विजुअल स्टूडियो, जो भी आपको यूजर फ्रेंडली लगे। ओके, okay, so the Shubham Bhagat is asking how hard to learn a programming language if you one is from a non-IT department. ओके, सो शुभम, आपको तो पहले देखो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको थोड़ी सीखनी ही पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी एक्चुअली हार्ड नहीं होती है, आपको बस एक सॉल्यूशंस के साथ आना पड़ता है। आप एक बार अगर आप सॉल्यूशन सोच लिए हो तो फिर उसके बाद कोडिंग बहुत इजी होती है। बस आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी करनी है, कि कोई प्रॉब्लम के लिए एफिशिएंट सॉल्यूशन कैसे सोचा जाए। पहले आप सॉल्यूशन सोच लो, पहले कोडिंग की तरफ मत जाओ, पहले सॉल्यूशन सोच लो, देन यू कैन गो फॉर
computer programming.